फैक्टराइजेशन करेंगे 15 और 30 का। यू नो 30 इज मल्टीपल ऑफ 15, सो एलसीएम इज 30। फैक्टराइजेशन करेंगे 15 को, 3 5 जा 15, 5 1 जा, एंड 30 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 15, अगेन 3 में डिवाइड करेंगे आएगा 5। यू नो 5 1 जा 5, सो 15 इक्वल टू ये 3 इंटू 5 एंड 30 इक्वल टू ये 2 इंटू 3 इंटू 5। You know LCM means LCM is the product of the prime factor which is occur maximum times. Here 2 occurs once and here none, so maximum time 2. Then here 3 occurs once and here once, so write down once. Here 5 once, here once, so write down once. So LCM equal to 30. 16 and 32. Here 32 also multiple of 16, so LCM is 32. Write down 16, 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 8, अगेन 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 4, देन 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 2, देन 2 1 जा 2, एंड 32 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 60, अगेन 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 8, देन 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा, सो 16 इक्वल टू ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 32 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. You know LCM is the product of the prime factor which occur maximum times. Here the factor prime factor 2 occurs here 5 times and here 4 times, so write down the maximum time 5 times. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 equal to 32. See 18 and 36. You know 36 is the multiple of 18, so LCM is 36. Write down 18, 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 9, 3 में डिवाइड करेंगे 3 3 जा एंड 3 1 जा, देन 36 यू नो 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 18, अगेन 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 9, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा, सो 18 को एक्सप्रेस करेंगे प्राइम फैक्टर्स में तो क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 36 को ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. So LCM is the product of the prime factors which occur maximum times. So here 2 occur 2 times and here once. Write down 2 times, the maximum times 2 into 2. Then here 3 occur 2 times and here 2 times. Write down 2 times, 3 into 3. So LCM equal to 36. D 20 and 36. प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 20 को 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 10, अगेन 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 5, यू नो 5 1 जा 5, देन 36 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 18, 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 9, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा, 20 इक्वल टू ये 2 इंटू 2 इंटू 5 एंड 36 इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 3. You know LCM is the product of the prime factor which occur maximum times. 2 here occurs 2 times, here 2 times. Write down 2 times. Then 3 occurs here 2 times, here none. So write down 2 times 3 into 3. Then 5 occurs here once, here none. So write down once. So LCM क्या होगा 2 into 2 into 3 into 3 into 5, you know 2 into 5 10 and 2 into 3 into 3 equal to 18, so 18 into 10 180, so LCM is
180. 25 and 40. प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 25 का, 5 5 जा 25, 5 1 जा, एंड 40 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 20, अगेन 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 10, एंड 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा. So 25 equal to 5 into 5 and 40 equal to 2 into 2 into 2 into 5. So LCM is the product of the prime factor which is occurs maximum times. Here 2 occurs 2 times, here none. So write down 2 times 2 into 2. Sorry, 3 times, here none. So write down 2 3 times. Then here 5 occurs once and here 2 times. So write down 2 times 5 into 5. So क्या हुआ, LCM equal to 200. 2 into 2 into 2 8, 8 into 25 8 24 and 60. प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 24 का 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 12, अगेन 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 6, देन 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 3, 3 1 जा 3. देन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 60 का 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 30, अगेन 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा. So 24 equal to ये 2 into 2 into 2 into 3 and 60 equal to 2 into 2 into 3 into 5. LCM means LCM is the product of the prime factors which occur maximum times. Here 2 occurs 2 times and here 3 times. So 3 times write down 2 into 2 into 2. And then you got here 3 occurs once and here once. So write down once. Then 5 occurs here once and here none. So write down 5 once. So LCM equal to 2 into 2 into 3 into 5 equal to 120. 30 and 70. प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 30 का 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 15, 3 में डिवाइड करेंगे आएगा 3 5 जा एंड 5 1 जा. देन 70 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 35, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा. तो 30 equal to ये 2 into 3 into 5 and 70 equal to ये 2 into 3 sorry 5 into 7. LCM is equal to क्या होगा, the prime factor is equal maximum times 2 here once and here once, write down once. Then here 3 occurs once and here none, so write down once. 5 here occurs once and here once, so write down once one time. Then 7 here occurs once, here none, so write down once. So आएगा कितना, 2 into 5 10, 3 into 7 21, so 21 means 210. कितना ये 60 and 80. प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 60 का 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 30, अगेन 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 15, 3 5 जा 15 and 5 1 जा. देन 80 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 40, अगेन 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 20, 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 10 एंड अगेन 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 5, 5 1 जा 5. सो 60 इक्वल टू ये 2 into 2 into 3 into 5 and 80 equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 5. LCM is the product of the prime factor which is occurs maximum times. So here 2 occurs 2 times and here 4 times. So write down 4 times, 2 into 2 into 2 into 2, and here 3 occurs once, here none, write down 3 once, and 5 occurs here once and here once, write down once. So LCM equal to how much? Here 2 into 2 into 2 into 3 into 5 equal to
240, 64 and 96। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 64 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 32, अगेन 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 16, 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 8, 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 4, 2 2 जा 4 and 2 1 जा। देन 96 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 48, 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 24, 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 12, 2 6 जा 12 and 2 3 जा and 3 1 जा। सो 64 equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into हो गया। देन 96 equal to ये 2 into 2 into 2 into 2 into 3। So LCM is the product of the prime factor which is occur maximum times. Here 2 occurs 5 times, here 6 times. So write down 6 times 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 and 3 occurs here once, here not, write down once. So LCM is how much? Here 64 into 3. So 3 4 ja 12 and 6 90, 192 is the 75 and 180। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 75 का 3 में डिवाइड करेंगे आएगा 25 एंड 5 5 जा 25 यू नो एंड 5 1 जा। देन 182 में डिवाइड करेंगे आएगा 90, अगेन 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 45 यू नो, 3 में डिवाइड करेंगे आएगा 15 एंड 3 में डिवाइड करेंगे आएगा 5 एंड 5 1 जा 5। सो 75 equal to 3 into 5 into 5 and 180 equal to 2 into 2 into 3 into 3 into 5। You know LCM is the product of the prime factor which is occur maximum time. Here 2 got 2 times, here none. So write down 2 times 2. Then here occurs 3 once and here 2 times. So write down 2 times 3 into 3. Here 5 occurs once and here 2 times. So write down 2 times 5 into 5. So क्या होगा ये 2 into 5 10 and 2 into 3 into 3 into 5 यानी again 2 into 5 10 and ये 9, 3 into 9, so 900 is the answer। Okay, 90 and 120। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 90 को 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 45, 3 में डिवाइड करेंगे आएगा 15, अगेन 3 में डिवाइड करेंगे आएगा 5 यू नो 5 1 जा 5। देन 120 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 60, अगेन 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 30, 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 15 यू नो 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा। So 90 equal to 2 into 3 into 3 into 5 and 120 equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 5। Or LCM is the product of the prime factor which is occur maximum time. Here 2 occur once and here 3 times. So write down 3 times 2 into 2 into 2. Here 3 occurs once and here 2 times. So write down 2 times 3 into 3. Here 5 occurs once and here once. So write down once equal to कितना होगा ये 2 into 5 10 and 2 into 2 4 into 9 कितना होगा 36। एक जीरो बिठा